Now, there's massive uproar that is taking place in Patiala's Rajiv Gandhi National University of Law. Now, it's students versus the Vice Chancellor that's taking place over the Vice Chancellor's late night check inside a girls' hostel. The Vice Chancellor, Professor Jai Shankar Singh, allegedly visited the girls' hostel to inspect and to identify students who were smoking and drinking alcohol after midnight. He had received many complaints. Now, protests have erupted after students said that they were not dressed properly for a male to enter the premises. They are accusing the VC of entering without notice and even going inside the rooms of some of the female students. Protesting students also allege that this was not an isolated incident. The Punjab Women's Commission has heard all the concerns of the students and has assured that there will be a thorough investigation in this case. In fact, a committee for the same has also been formed. अगर ये शान क्वेश्चन है ना, तो इन सब चीजों के बाद जो हम कर रहे हैं, आपने हमें मजबूर कर रहे हैं करने के लिए। हमने इतने टाइम से कुछ नहीं बोलता। कल आप एक लड़की के कमरे में गए हो, वो कंसेंट वायलेशन है। और अगर आपको लगता है एन अपॉलॉजी इज ओके कि अगर आपने एक सॉरी बोल दिया उससे कंसेंट वायलेशन ठीक है, तो वो गलत है। आप लड़कों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि वो किसी का भी कंसेंट वायलेट करेंगे और सॉरी बोलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर लड़कियों के कमरे में गया हूँ, बाकी बैचेस क्यों करें। ये सरासर झूठ है। ऑन कैमरा हमारे पास प्रूफ है कि वो थर्ड ईयर के बच्चों के कमरों में भी गए थे, वो और बैचेस के बच्चे में भी कमरों में गए थे। तो वो सरासर कैमरा पे मीडिया को झूठ बोल रहे हैं अपनी साइड बेटर करने के लिए। इसीलिए उनका इस कॉलेज में रहना, उनका इस हाई पोजीशन पे होना अब सेंस नहीं बनता है बिल्कुल भी। Today we are protesting against the measures taken by the VC, the statements given by the VC. It started by one trigger event when the VC entered the girls' hostel and entered unaccompanied by the hostel warden or any female guard, which were called by the students later. He entered the rooms of various students ranging from the first year and the third year as well. This incident was only a trigger, and there are various other issues ranging from the statements given by the VC, moreover how he's acted with the students, the academic freedom that has been curtailed, which is why today we are sitting here since the past 4 days and would continue to sit for the next whatever many days that we have to until we get a resignation from the Vice Chancellor. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤਰਕ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੁਝ ਫੀਮੇਲ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਸੈਂਸਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਚੁਣਨਗੇ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ।